Okay, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कैमरा ऑन कर लो सभी। कैमरा ऑन। सब सो रहे हैं क्या? कैमरा ऑन करो ना। ओके, कैमरा ऑन जल्दी से। तो हम ये दिखाना चाहते हैं that Hilbert spaces are reflexive। तो मैं जरा फिर से इसको लिखूंगा। तो हिल्बर्ट हम ये प्रूव करना चाहते हैं आर रिफ्लेक्सिव। मैं एक चीज लिखना भूल गया, वो क्या? should I write it like this? तो यानी मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो साई है ये ऑन एवरी एक्स हियर, मतलब सॉरी h2, तो उसका मतलब क्या है ऑन टू दिखाना? यानी फॉर एवरी वेक्टर हियर इट हैज अ प्री इमेज अंडर दिस साइड। सो आई यूज्ड ऑल्सो, ये अपना रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। मैंने कहा कि सपोज अब एक डबल, ये जो एक्स डबल स्टार है ये एक्स में बिलोंग करता है। सो मैंने कहा था सो इफ एक्स डबल स्टार belongs to H double star, अब क्योंकि वो भी हिल्बर्ट स्पेस है by this corollary जो हमने की थी, it implies that there exists some unique, let's call it Y star belonging to H star such that X double star at X star is equal to inner product of X star with Y star for all X star belonging to H star। अब यहाँ देखने वाला है कि वहां मैं F लिखता था बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? वहां मैंने F लिखा था, F belongs to H star। अगर मैं उसकी या उसकी जगह लिखूं X star belongs to H star तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट रीनेमिंग, इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं और यहाँ पे तो मजबूरी है करने की, वरना ये मैसअप हो जाएगा। एनीवे, so this is by Rees representation theorem. Now applying Rees representation theorem to H star. So Rees representation theorem to H star, I should apply to H, but ठीक है H star वो भी चलो। यहाँ मैंने कहा था H double star, तो ठीक है H या H star बात एक ही है, तुम्हें बताइए। So for each Y star belonging to H star, there would exist, let's call it, there exists a unique Y belonging to H such that Y star at Z, अब Z मैंने लिखा क्योंकि यहाँ X यूज हम कर चुके हैं, लेकिन फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, यानी फॉर ऑल Z belonging to H। तो वंस आई एम डन देयर, तो फिर मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। फाइनली for all X star belonging to H star, there exists a unique X belonging to H such that, ये मैंने कहा ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, such that X star at Z is equal to ZX for all X belonging to H। अब इसी को थोड़ा हमें आपस में जोड़ना है, जो तीनों हमें ये फॉर्मूलाज मिले ना। Now X double star at X star using the first equation is equal to X star Y star, जो कि तुम्हें पता ही है। यहाँ पे जो हमने इसको
बाय रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। लेकिन हमें पता है अब एक्स स्टार वाई स्टार कहाँ बिलोंग करते हैं, एच स्टार में। हमने इससे पहले किया था एफ जी अगर एच स्टार में है, जो डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट की, एफ जी वुड बी, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा जिसको हमने z रखा था, z वाई इस तरह से। तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो इस तरह से ना, इनका आपस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस फंक्शनल की कॉरस्पॉन्डिंग z है, इस फंक्शनल की कॉरस्पॉन्डिंग y है। तो अगर मैं ढूंढ रहा हूँ x स्टार y स्टार, इट विल बी इनर प्रोडक्ट। मुझे देखना है y स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेक्टर है, तो y स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है y। तो पहले मैं y लिखूंगा, फिर मुझे देखना है x स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेक्टर है x, यहाँ मैं x लिखूंगा, जो मेरा फॉर्मूला है फॉर द इनर प्रोडक्ट इन द टू। तो ये yx हो गया, बट yx इज द सेम एज, अब देखो ना, x स्टार z इज इक्वल टू zx, बट अगर मैं यहाँ y लिख दूं दोनों जगह, सो इट इज एक्चुअली x स्टार y, where y belongs to h, y is unique, h belongs to h, but and this is true for all x star belonging to h star. तो हमें क्या मिला, that is x double star at x star is equal to x star at y for some y belonging to h, uh, which means j of y is equal to x double star. So that is for every x double star belonging to h star, there exists some. अब y इस वजह से यहाँ आ गया क्योंकि हम x बहुत जगह यूज कर चुके हैं. What is there in name? असल चीज है ये फॉर्मूला, है ना. So अगर ये फॉर्म, so there exists y belonging to h such that g of y is equal to x double star. It implies that मैंने j लिखा यहाँ पे, देखो ये गड़बड़, psi लिखना चाहिए क्योंकि मैंने psi यूज किया है. That is psi is on. Okay. So psi is on to means that h is reflexive. तो ये important basic facts थे about Hilbert spaces. एक तो dual भी Hilbert होगा, और there is a correspondence between the space and the dual which preserves addition and norm. And now अब हम ये करेंगे कि this is not true, जो Rees representation theorem, और चलो मैं इसको लिखता हूँ as an exercise. Projection theorem, both projection theorem and Rees representation theorem. Rees representation theorem fail. They are not true. Theorem fail if the space is not complete. If the space मतलब is not complete, यानी जो inner product space है अगर वो हिल्बर्ट नहीं है, complete नहीं है, यानी हर कोई कोशी सीक्वेंसेस पे कन्वर्ज नहीं करती, then the क्या बोलते हैं, then it is not क्या बोलते हैं, then ना ही प्रोजेक्शन थ्योरम उसके लिए ट्रू होगा, ना ही रीज रिप्रेजेंटेशन से. सो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. लेट्स नाउ कंसीडर x equal to all sequences x equal to x1, x2, so on and so forth, such that xi's are scalars and there exists should I write n not or capital N? चलो capital N लिखता हूँ. N belonging to the set of natural numbers such that xi is equal to 0 for all I greater than equal to this capital N. And then after a certain stage, we get only zeros in the tail of this sequence. The question is, मतलब आप कह सकते हो क्या ये C0 है या C00 है,
ये C00 नहीं है, C00 का ये सेट है। C00 पे जब मैं सुप नॉर्म लगाऊंगा ना, इस पे सुप नॉर्म अगर मैं इस पे लगा दूं इस x पे, तो ये बन जाएगा C00, जो कि हमने किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इस पे वो नॉर्म नहीं लगा रहे। ठीक है, ओके। अंडर पॉइंट वाइज ऑपरेशंस इट्स वेक्टर स्पेस, लेकिन वेक्टर स्पेस के तो सर उसका कोई कनेक्शन नहीं। अंडर पॉइंट वाइज ऑपरेशंस X is a vector space and we define xy to be summation n runs from 1 to infinity xn yn bar, then what? Then star defines an inner product. अब inner product ये define करेगा, that's straightforward. Why? Because this is actually not an infinite sum. After a certain stage, ये जो x and y जो मेरा set x है, जहां में ये belong करते हैं, मतलब for all x y belonging to x, that's equal to all sequences of this type xi belongs to k for all I greater than equal to 1, and there exists an n natural number such that xi is equal to 0 for all I greater than equal to n. क्योंकि ये after a certain stage 0 हो रहा है, so this is effectively a finite sum, और finite sum पे तो obviously this defines an inner product, so that अगर inner product है तो inner product would give rise to a norm, so that this the positive square root of xx 1 by 2, which is the same thing as summation n runs from 1 to infinity xn square whole raised power 1 by 2 defines, makes, gives a norm, is a norm. So it's an inner product space, but it's not complete. So वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ होम असाइनमेंट। इसका नाम नॉर्म का नाम रखेंगे, चलो डबल स्टार। x is not, जो मैंने यहाँ डिफाइन किया, x is not complete, x is not complete under the norm defined under this double star norm. So therefore ये मैं यहाँ लिख देता हूँ now, x is not a Hilbert space, and it's an inner product space, but it's not a Hilbert, it's not complete. लेकिन ये तुम करके दोगे। I want, मतलब तुम्हें कुछ वैसा ही करना होगा जैसे हमने इसके लिए किया था। हमने you try it, अगर नहीं आए तो मुझे बता दे। Okay, so this is not a Hilbert space. अब हम दिखाएंगे इस पे जो है रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम भी ट्रू नहीं है, और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन थ्योरम भी सच नहीं है। So define f from x to k by f of x is equal to summation I runs from 1 to n, 1 to infinity xi by I, right? Where of course ये जो x है, x1 x2, it belongs to x, and you know that this is just a finite sum because after a certain stage these sequences are becoming 0. So this is well defined. So this is a finite number, this is a finite scalar because xi's are scalars. So this is a well defined map. Then f is a linear map, वो linear भी automatic तुम आराम से चेक कर सकते हो, because basically हमें convergence के बारे में नहीं सोचना, because this is effectively a finite sum. Okay, and linear map है दूसरा, mod of f of x जो होगा वो होगा equal to mod of summation xi by I runs from 1 to infinity, but this can be written as, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सोचूं,
I runs from, ये कौन अब आया क्लास, आरिफ. So you have, अगर मैं इसको ऐसे सोचूं 1 by I multiplied by xi, right? This is a finite sum, no need to worry. And using the what we call क्या है वो Cauchy-Schwarz inequality for scalars, so this would be less than equal to summation I runs from 1 to infinity 1 by iota square, 1 by I, not iota, square whole raised power 1 by 2 into summation modulus of xi square I runs from 1 to infinity. This is by Cauchy-Schwarz inequality of numbers, not our inner product. एक ही बात है वैसे, दोनों एक दूसरे से निकलते हैं नहीं. The one is, you can derive one from the other. Okay, now look at this number. This is basically, अगर तुम देखो तो I को वैल्यू अगर हम देते जाएंगे, this is 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus, so you know this converges, and this is actually pi square by 6. ये sum. So this is actually equal to pi square by 6 the square root into norm of x, जो हमने norm define किया था. यानी that is f of x in mod is less than equal to pi by root 6 into norm of x. So it's like f of x is less than equal to some k times norm of x for all x belonging to x, which means that f is a bounded linear functional, यानी f belongs to x star. Now पहला हिस्सा हम दिखाएंगे Rees representation theorem fails for f. यानी Rees representation theorem, यानी इसको हम inner product से नहीं लिख सकते इस फंक्शनल, यानी Rees representation theorem कहता है हर कोई functional of the Hilbert space can be written via an inner product. It can be represented in terms of an inner product with a specific unique vector. हम कहेंगे यहाँ पे वो सच नहीं हो सकता, तो Rees representation theorem fails for f. वो कैसे? Because otherwise अगर नहीं होता, अगर suppose Rees representation theorem इसके लिए true है, then there exists a unique y belonging to x such that f of x is equal to xy for all x belonging to x. So that is the inner product of Rees representation statement. Now consider, now choose en equal to 0, 0, so on and so forth, 0, 1, 0, 1 is at the nth place. And of course this belongs to x, क्योंकि इसमें तो एक ही non-zero term है. x में ऐसी sequence है जिसमें there are only finitely many non-zero terms, जिसमें तो एक ही है. So consider choose en belonging to x. So then what? So 0 f of en किसके बराबर होगा? तो f of x जो है वो है summation xi by I runs from 1 to infinity, where x is equal to x1, x2, so on and so forth. यानी हम क्या करते हैं, f of en जो है वो आएगा कि हम जो नंबर लेंगे उसका जो इंडेक्स है या किस पोजीशन पे वो हो, उस पोजीशन के इंडेक्स से उसको डिवाइड करेंगे. मतलब दिस शुड बी जस्ट इक्वल टू 1 by n, क्योंकि एक ही नॉन जीरो टर्म है, वो nth पोजीशन पे है, बाकी सारे जीरो. So f of en is equal to 1 by n, but that means f of 1 by n is equal to f of en. But f of en can also be written as the inner product of en with some y, right? What would be the inner product of something with y? Of course, that is just yn. मतलब इसमें तो बाकी सारे zero है, एक जगह 1 है. So that means now this is true for all n greater than equal to 1, which means that yn then must be equal to 1 by n for all n greater than equal to 1,
which means that y जो है which is not equal to 0, इसकी तो कोई भी टर्म 0 नहीं है, इसका मतलब y तो x में बिलोंग ही नहीं कर सकता, तो ये तो फेलियर हुआ, क्योंकि हमारे हिसाब से तो y x में बिलोंग करना चाहिए बाय रिप्रेजेंटेशन थ्योरम. So which is a contradiction? Which is a contradiction? अब मैं चाहता हूं इसका दूसरा हिस्सा मैं आज करूं कि ना करूं. चलो करते हैं, करें, देखता हूं कितना है लंबा चौड़ा. चलो कर देते हैं, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं. So second, projection theorem does not hold for x. Projection theorem does not hold for x. Hold for x. वो कैसे? Now for if we take m equal to kernel of f, अब जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा f of en जो है वो 1/n है, इसका मतलब ये हर चीज को 0 पे मैप नहीं करता हमारा फंक्शनली जो हमने यहाँ डिफाइन किया है. सो इसका मतलब ये जो है ये पूरे का पूरा h नहीं हो सकता. दैट इज m is a proper, then m is a proper subspace of h. तो अगर प्रोजेक्शन थ्योरम ट्रू होता, proper subspace of h by projection theorem, मतलब अगर मैं मान लूं इस पर प्रोजेक्शन थ्योरम ट्रू है, by projection theorem, then by projection theorem I should have x equal to m direct sum m perp, right? Which implies that of course m perp cannot be the singleton 0 because m is not the whole space h. So let's call it star. हम इसी में contradiction लिखें. So let z belong to m perp. तो अगर z m perp में है, it could be a non-zero vector, possible है क्योंकि m is not just the singleton 0. So we choose m such that Zn is equal to 0 for all n greater than or equal to capital N, where of course z is given by obviously, क्योंकि of course m पर भी तो x का हिस्सा है, उसकी एक सब स्पेस है, तो इसमें भी वही वैसे ही वेक्टर्स होंगे जो after a certain state 0 हो जाते हो. Now with the help of these z we define a sequence of vectors, यानी for n running from 1 2 up to capital N, you define a set of vectors belonging to x such that xn I, उसका जो ith component है n vector का, वो 1 है if I is equal to n, right? वो है minus n capital N plus 1 divided by n if I is equal to n plus 1, sorry capital N plus 1, n plus 1. Let me talk about confusion नहीं होना चाहिए यहाँ पे. Capital N plus 1, this is equal to 0 otherwise. मैंने मेरे कहने का मतलब है x1 जो वेक्टर है x1, जब मैं यहाँ 1 देता हूँ, इसका यहाँ पे 1 है, फिर 0 0 है, फिर जो n plus 1th पोजीशन है, n plus 1th पोजीशन पे ये है minus n plus 1 by 1, क्योंकि n 1 है, राइट? उसके बाद 0 0 है. इसी तरह से x2 जो है सीक्वेंस, वो दूसरी पोजीशन पे, मैं क्या लिखा, ठीक है बिल्कुल सही लिखा. ये जो दूसरा वेक्टर है ये ऐसा है कि जब in है, यानी जब n2 है तो ये 0 1 है, फिर इसी तरह से 0 0 0, फिर जो यहाँ पे होगा फिर ये minus n plus 1 by 2, उसके बाद बाकी हर जगह 0 0, इसी तरह से ये होता रहे.
यानी इस पोजीशन पे फिक्स्ड है इसका वैल्यू -n+1/2 -n+1/3 जो वेक्टर्स हैं। तो ये सभी वेक्टर्स हैं, इसमें दो ही नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो ये x में बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ, अदरवाइज लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, सो वंस दैट इज क्लियर, नाउ इफ आई अप्लाई f ऑन देम, इसमें दो ही नॉन जीरो टर्म्स हैं, f ऑफ xn जो होगा, हर एक में खाली दो ही नॉन जीरो टर्म्स हैं। तो मेरा क्या होता है, ये जो फंक्शन है, इट इज f of x is equal to summation xi by i, i runs from 1 to infinity। अब उस पोजीशन का वेक्टर लो और उसके इंडेक्स से डिवाइड करो। तो पहले तो ये है कि इस पे nth पोजीशन पे इसका 1 है तो आएगा 1/n, और कैपिटल n प्लस 1 पोजीशन पे है -n+1 डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल n, और ऑफ कोर्स हमें डिवाइड करना पड़ेगा उस पोजीशन के इंडेक्स से। So that would be basically 1/n minus 1/n, that's equal to 0, which means that ये जो xn vectors हैं, they belong to the kernel M for all n running from 1 to up to capital N, which implies that, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि 0 मतलब inner product with this z, because z belongs to M पर, अगर ये M में है तो xn के साथ इसका जो inner product है वो 0 होगा for all n, but by definition of the inner product, this is summation I runs from 1 to infinity zi xin, and needless to say इसमें तो दो ही नॉन जीरो टर्म्स, राइट। अब zi के बारे में सोचो, zi ऐसा है, तो you have got z1 z2 so on and so forth, then you have some z n-1, उसके बाद 0 0 0, क्योंकि n ऑनवर्ड्स इसका 0 है। और दूसरा जो तुम्हारा वेक्टर है उसमें तुम्हारा जो है दो ही नॉन जीरो टर्म्स है, एक तो nth पोजीशन पे एक 1 है जो कि रन करता है, यहाँ पे कहीं पे इसका 1 है nth पोजीशन, तो यहाँ 1 है, और यहाँ पे कुछ जो भी टर्म है -n+1 बाय क्या था वो स्मॉल n, लेकिन जब उनका इनर प्रोडक्ट लेंगे ना आपस में, वो सारा 0 हो जाएगा, बचेगा सारा जो इससे पहले वाली कोई इनकी टर्म है, वो क्या है, वो है ऑफ कोर्स 1, मतलब या तो यहाँ पे 1 है, मतलब nth पोजीशन पे कहीं पे यहाँ पे 1 वेक्टर है, तो वो 1 ले लो और इसका nth टर्म ले लो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, so it would be just zn. Now this is true for all n running from 1 to up to where am I, capital N. So it implies that Zn is equal to 0 for all n running from 1 to up to capital N, और उसके बाद भी 0 है, that's strange, which means that z, मतलब it cannot be z, इसका मतलब z तो 0 0 0 ही है, well it's just a zero vector, क्योंकि n onward 0 है, लेकिन इस फॉर्मूला से हमें मिलता है प्रोजेक्शन थ्योरम से, then this must be also 0, the terms before n, which is a contradiction, which implies that z is equal to 0, that is m perp जो है वो singleton 0 होगा, which is a contradiction. This contradiction proves that projection theorem is not true for this x. अब मैंने तुम्हें ये दिया है होम असाइनमेंट, तुम दिखा दो x is not complete, तो तुम करोगे। So let me end it here. आज काफी मुझे लगता है थोड़ा थक गए तुम, जैसा कि मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं, so let me end it here. Thanks, bye.